Okay. So with for system call, let's solve this question where this is one block and this is else of that block, you know, then and this is if and this is else of that block and this is out of every if. Let's solve that. So initially parent process P से हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है, और order because we have to find out the order in which order this printf values will be printed. So for ordering we'll go with second method, that is P parent. When parent executes its code, first is if condition, inside if fork system call, so it will execute it will fork another child process. So let's put P here, the same, the copy of that parent process. It has created another child process, C1. Okay. And this P, this new fork, this fork system call will return positive to the parent node. That is this positive to the parent node and 0 to the child node just created. So if positive, that means the whole condition of the if is true, it will go inside the if. Okay, the parent can go inside the if, whereas the new child that is created, it gets 0 as fork output or return output is 0. So child will not get into the if statement. Okay, so it will go directly into the else part of this statement, this if else if statement. So this is else part. C1 will execute directly the next instruction, that is else part, but the parent can go inside the if statement, and inside the if you can see there is another if. Okay, so when we are executing the parent first, we'll execute C1 after that. Okay, so parent process will execute the next if statement because it is true now. It is nested if. Inside if, again there is a fork system call. So if when there is a fork, let's create that fork. One more P and then fork another child C2 here. So here this will return positive to the parent and 0 to the child process that is created here. But what is there? There is an operator, not operator is put inside the fork system call. That means not positive means it is false, and not 0, that is not true, that means, sorry, not false, that means true. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा. So because of that, the parent cannot go inside that in nested if statement, whereas the child can go inside that. Okay, so parent process, when the parent process execute this fork system call, it has created another child process, that is C2, and this fork return positive value to the parent, but because of this not operator, this whole condition get false. Okay, that means parent will directly switch to the next statement, that is else part of this if, whereas the child process can get into the this nested if statement. ठीक है, तो जब पेरेंट यहाँ पे आएगा एल्स पार्ट में, तो एल्स पार्ट इट विल व्हाट इट विल प्रिंट, देयर इज नो कंडीशन, नो एनी अदर कंडीशन, द parent will print 2. Okay, here the parent will print 2, and after printing, am I right, am I going right? Yes, and after printing this 2, it will go out of this if, क्योंकि if the condition true था, that's why it came inside, and now it goes out of this if and print this 4 state, printf statement, that is printing 4. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4. then next parent तो हमारा execute होकर terminate हो गया. the next child statement, that is C2, है ना, which is forked here, यहाँ पर हमने fork किया था, the condition is true for this child. How? This fork statement returned 0 to the child, that is C2, 0 return किया, and not 0 means 1 होगा. तो total if condition
जो हो गई हमारी ट्रू हो गई फॉर चाइल्ड 2, इस C2 के लिए ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो ये अंदर आएगा, अंदर आएगा तो अगेन एक फोर्क है, दैट मीन्स हम एक और फोर्क करेंगे। फोर्क करेंगे तो इस C2 को हम एज इट इज कॉपी करेंगे और एक नया चाइल्ड क्रिएट करेंगे, दैट इज C3। ओके, तो दिस फोर्क क्रिएट्स दिस C3, यहाँ पर C3 क्रिएट हुआ, राइट। then this both, sorry ये C2 है ना, C2 and C3, both of these processes will execute next statement, that is printf 1, है ना। तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट करेगा एंड आफ्टर प्रिंटिंग दिस printf सीधे कहाँ आ जाएगा, बाहर, printf 4। सेम वैसे ही C3 के साथ भी होने वाला है, ये 1 प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा एंड देन आफ्टर that 1 it will come outside of that if condition and सबसे लास्ट में हमारा है कॉमन स्टेटमेंट, दैट इज 4, ये प्रिंट किया। अब हमारा ये वाला जो लेफ्ट हाफ ऑफ द पार्ट है ना, वो हमारा हो गया है। और ये राइट साइड में हमारा एक चाइल्ड प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से ये कंडीशन उसकी 0 थी, तो 0 थी मतलब इफ इज फॉल्स फॉर दैट C1, तो ये डायरेक्टली एल्स पार्ट में गया था जहां पर इसने 3 प्रिंट किया और बाहर आने के बाद इसने 4 प्रिंट किया। सो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर हम कैसे देखते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। सबसे लेफ्ट पार्ट में है ना, सबसे लेफ्ट में आपका जो प्रिंट हुआ है वो, देन लेफ्ट से आपको लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपको जाना है ऐसे, ठीक। तो जितने लीफ नोड्स हैं उसमें जो भी वैल्यू है दैट विल बी प्रिंटेड इन दैट ऑर्डर, 2 4 1 4 1 4 3 4। Okay, this will be the answer.